Hello, children. Welcome to the digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School, Gadawara. I am Amit Toshniwal, your economics teacher. This video is for class 11th. Subject is economics. Chapter number 1, Indian economy on the eve of independence, this is the first chapter of part B. After the project work, this is the conclusion part of this lesson, यानी कि लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3. Today's first topic is good and adverse impact of British rule on India's economy. We can discuss over it in first two videos when I was explaining you about infrastructure in India during British rule. So I explained you Britishers, they tried to improve railways, roadways, waterways and airports. It was a different matter that they did it for their own benefits. It did not help much the people who were living in rural areas, but ultimately it was being done in India. So it was means they tried to improve and enhance the infrastructure in India. So we'll talk about the good effects first, that is in agriculture. We were British rule के आने से पहले the agriculture was being done in traditions. I mean to say परंपरागत खेती होती थी पहले. But during British rule, Indians started, or you can say they were imposed to start with commercial agriculture. And it had happened when they were forced to do the they were forced to plant indigo, and their outlook was changed and it affected them positively. Previously, agriculture was the mean of subsistence. Subsistence means ये मानते थे कि खेती से खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, दैट्स इट, इनफ है, घर के लिए हो जाता है और कुछ यहाँ वहाँ दे देते हैं तो घर का दूसरे काम चल जाते हैं. बट in British rule it was become a profitable concern. Means Indians learned how they could make money, how they could reap more profit by their agricultural lands. Railways, undoubtedly, the greatest change which was brought about by the Britishers, it was the development of railways, roadways and communication. हम फिर से कह रहे हैं, they did it for their own benefits, to carry the loads and to carry goods for the movement of the armies. But due to this, one positive change that had happened, it was
Indians, no, they started tying themselves and their staunchness about different religions, regions, caste, language, it had come down. So there was a wave of cultural unity and emotional integrity among Indians. Then point C is support system. Transportation, communication and banking sector, when it was developed, so it had helped a lot during the time of natural calamities, epidemics, and it had become more convenient to travel from one place to another. Fourth, legacy of efficient system of administration. The Britishers were more disciplined than Indians. I mean to say, their arrangements and organization, it was much better than Indians. So they taught how to administrate, how to organize things, how it could be done in a very systematic manner. So it was taught to Indians by Britishers. And last is development of monetary system of exchange. Barter system was there, means it was a custom in society, because Indian people who were living in rural areas and villages, so they were backwards and their wants were limited, of course, but they used to follow barter system, and it brought conflicts and quarrels among them because there was no standardization of measures. So monetary exchange system, it was very important change, and due to which the specialization and division of work, labor and universal marketing system developed. Now the एडवर्स इफेक्ट, तो जितना बुरा उन्होंने किया उससे बुरा तो कोई कर ही नहीं सकता था, ब्रिटिशर्स एंड मुगल्स। तो जितना एक टर्माइट लकड़ी को नुकसान पहुंचाता है, दीमक जो खोखला कर देता है, वैसे उन्होंने हमारी इकोनॉमी को खोखला कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत हुआ सभी का, राजा नवाब से लेके आर्टिशंस और जो सबसे निचले स्तर का जो वीकर सेक्शन का जो आदमी था उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया, किसी को नहीं छोड़ा। तो इससे बुरा और क्या करते वो। सो विल डील दीज पॉइंट्स वन बाय वन। फर्स्ट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। They forced Indian farmers to produce such items or such crops which could be used as raw materials in the industries in Britain, in England, like sugar cane, sugar factory के लिए, cotton, textile mills के लिए, linseed, groundnut, oil refineries के लिए, indicos, textile and dyeing industry के लिए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने करवाई। तो बाकी की जो खाद्यान्न चीज़ें थी, मतलब जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी, गेहूँ, चावल, दालें,
ज्वार बाजरा मक्का, धीरे धीरे ये कम होता गया। इनका जो एरिया है, कल्टीवेशन एरिया, वो धीरे धीरे कम होता गया। देन distortion of industrial structure. So in earlier topics we already had discussed कि ऐसी कोई भी फील्ड नहीं थी, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं था जहाँ पर कि इंडिया सुप्रीम ना हो। हमारे जो क्राफ्टमैन थे, आर्टिशंस थे, है ना, हैंडीक्राफ्ट वर्क जो करते थे, वो इतने सुपर थे, इतने सुपीरियर, इतने सुपर थे कि सॉरी कि उनका जो भी काम होता था ना, वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इट वाज फेमस। बट दे डिस्ट्रॉयड आवर कॉटेज इंडस्ट्री, दे लेविड मोर एंड मोर टैक्स एंड दे डिड नॉट हेल्प देम इन एनी बाय एनी मीन्स. So this exploitation policy destroyed and spoiled cottage industry, due to which they collapsed. So it was the bad and very adverse effect on industries. They did not try to set up and establish capital goods industries in India. So it was also a big lacking during British rule. Third, safeguarding of British investors in India, for which they made a policy of discrimination and they tried to protect, and they were given imperial preferences to capture Indian market, which was safe and secure way for British investors in India. Biased efforts of infrastructural development, as we discussed. Biased means भेदभाव किया दो तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया, लेकिन उन जगहों पर जहाँ से उनको फ़ायदा था। कोस्टल प्लेन्स में किया, वहाँ पर पोर्ट्स डेवलप किए उन्होंने, सी पोर्ट्स, ताकि शिप्स में रॉ मटेरियल भर के वो ले जा सकें और वहाँ से फिनिश्ड फर्निश्ड गुड्स, फाइनल गुड्स लाके इंडिया में बेच सकें। एयरपोर्ट्स वहीं बनाए, रोडवेज़ बनाया का वहाँ पर जहाँ पर कि आर्मी का मूवमेंट था, वहाँ का मूवमेंट जहाँ होता था वहाँ पर उन्होंने रोडवेज़ बनाए। रेलवे स्टेशंस वहाँ बनाए जो कि बिग ट्रेड सेंटर्स थे। बाकी रूरल एरियाज़ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये उन्होंने बायस यानी भेदभावपूर्ण तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। देन डिसेप्टिव ट्रिक ऑफ द मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम. So they promote consumer goods industry in the initial stage, but it was proved exploitative. 50% of gross profit means it used to go as managerial remuneration. तो इस प्रकार से, हर प्रकार से वो तो नुकसान ही नुकसान उन्होंने किया अपना। अब सबसे बड़ी बात आती है, गए अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी अंग्रेजियत छोड़ गए। अंग्रेजियत छोड़ गए मतलब divide and rule was the biggest policy of Britishers. They left India, they left Bharat, but before going they created such circumstances due to which the nation was divided, partition हो गया देश का। तो पाकिस्तान आया। अब पाकिस्तान आने से कौन कौन से नुकसान हुए हमको? जब पार्टीशन हुआ तो 82% पॉपुलेशन जो थी अनडिवाइडेड इंडिया की, वो इंडिया में रह गए और केवल 18% ही गई पाकिस्तान में। लेकिन एरिया गया उनके पास 23%, हमारे पास बचा 77। तो पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा हो गया और जोग्राफिकल एरिया हमारे पास कम हो गया। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमी है वो एडवर्सली अफेक्ट हो गई। देन प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास करना, उनको फिर से बसाना। जो रेफ्यूजीज़ थे उन लोगों को, बहुत सारे रेफ्यूजीज़ थे जो पाकिस्तान से आए थे इंडिया, तो इंडिया को उनको
रिहेबिलिटेट करना था, यानी उनको फिर से बसाना था, फिर से उनका पुनर्वास करना था. सो फॉर विच मीन्स दे वर गिवन अ ट्रीटमेंट, and it was an economic burden for us.